हम यहाँ पर एक और भी हम चीज़ देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया है विद फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बिज एप्लीकेशंस और पावर प्लेटफॉर्म CRM, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक प्रॉपर लर्निंग प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया है. सो हमारी यहाँ पर खुश नसीबी है कि हमें ज्वाइन किया है मिस्टर जिब्रान जमशेद, who is the country head for the education for Microsoft in Pakistan as well as Jordan and Lebanon. So please welcome Jibran Jamshed. Assalamu alaikum ji. Okay, this is a slide. Next year. Ji, thank you. First and foremost, thank you so much for inviting. Community की effort है, nothing beats it, to be honest. Been to like thousands of corporate events or Microsoft के अपने events and all these things. पर ये जो event है इसकी खास बात है, which I felt in last probably 1 hour 30 minutes. यहाँ पे किसी एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन नहीं है. प्रॉब्ली इस हॉल में 90% लोग जो बैठे हैं उनका थोड़ा थोड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट इज़ वाई वी आर सीइंग दिस मैसिव सक्सेस. आई डोंट नो कि मैं बहुत ज़्यादा क्या वैल्यू ऐड कर सकूँ आज के डिस्कशन में. आई थॉट एंड आई टुक अ लुक एट द एजेंडा. मैंने जब एजेंडा देखा, आई वॉज इन टच विद आतिफ. आई थिंक we have been chatting on LinkedIn for maybe 1 or 2 months and discussing कि इस event में हम क्या बात कर सकते हैं. I saw कि जी सारे industry leaders जो हैं from Mazik, from Systems, from Folio 3 and forgive me if I forget any other company, they are the head of engineering and champions of Microsoft business applications. So to be honest, I did not have much to contribute. पर एक चीज़ जो विच आई फील वेरी स्ट्रांगली, इट्स बीन ऑलमोस्ट मेरे 15 साल कंप्लीट हो गए माइक्रोसॉफ्ट में. वन थिंग विच आई फील स्ट्रांगली इज़ दैट एट टाइम्स हम जो है, और जो इस पर बार बार बात हो रही है, हम अपने आप को शायद पोजीशन उस तरह से नहीं कर पाते एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, जिस तरह से हमें करना चाहिए. इतना बड़ा एक रिसोर्स पूल है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. मेरी शायद इंडिविजुअल की कोशिश ज़रूर रहती है इन डिस्कशंस, बिकॉज अब मैं मल्टी कंट्री बिजनेस भी देखता हूँ. आई एम पार्ट ऑफ द रीजनल टीम, सो आई ट्राई टू प्रमोट पार्टनर्स फ्रॉम पाकिस्तान, रिसोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान इंडिविजुअल कैपेसिटी में. पर आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. एंड वन एरिया विच आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट, एंड इट्स प्रॉब्ली नॉट ओनली मी, it's the entire world which is talking about, is artificial intelligence. And I want to dedicate next 15 minutes to have a quick discussion on this very topic. Probably शायद आपके ज़हन में हों ये चीज़ें, but I just wanted to bring it on top of the surface. Digital transformation is happening at an unprecedented pace. Technology का society पे, economy पे जो impact है, we have never seen before. जहाँ पे कोविड की बहुत सारी डाउनसाइड्स थी, वहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि कोविड की वजह से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है अगले 20 साल में प्रॉब्ली नहीं हो पाती अगर ये कोविड इस किस्म के सर्कमस्टांसेस को लेके नहीं आता. एंड रियलिटी इज़ देयर. टुडे वी आर इन अ हाइब्रिड इवेंट. आप किसी भी इवेंट में चले जाएं, अब वो हाइब्रिड इवेंट है. इट्स नॉट एन ऑन साइट इवेंट. वी नेवर डिड एनी ऑनलाइन इवेंट्स, हाइब्रिड इवेंट्स, एंड टुडे वी आर सिटिंग देयर. And this is where artificial intelligence is that kind of the backbone of vehicle जिसके ऊपर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त बैंक कर रही है. Let's take a look at some of the quick stats, right? Because बात हो रही थी कि जी artificial intelligence का इस वक्त क्या footprint है मार्केट में. तो ये global surveys हैं जहाँ पे you would find, and these surveys are done on the enterprise scale. Enterprises के साथ ये surveys को run किया गया है. So nearly 95% of the enterprises, they think that AI is an important sort of a technology pillar in the journey of their digital transformation. 80% of the enterprises are reporting they are using AI in some form. And then obviously out of those 80%, 81% are seeing the return on investments coming out.
एक पॉजिटिव फीडबैक है ओवरऑल मार्केट से व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. At times, AI is taken as a technology component only, and for us, it's a cultural transformation. AI के multiple pillars हैं. Technology बिल्कुल है, आपकी tech skills हैं, but there are other things as well. उसकी जो business need और business applications हैं, there is a whole big story around ethics when we talk about artificial intelligence. It is dependent on a data-driven culture. Because if there is no data, if there is no data-driven culture, any and every effort on artificial intelligence would fail at the end of the day. And then the list of things goes on and on. The interesting part over here is कि जी artificial intelligence जो है, उसकी पूरी backbone जो है वो data के ऊपर है. And in whatever systems we are spinning off today, you're talking about power apps, you're talking about other low-code, no-code platforms, you're talking about Salesforce and ERPs and D365 and CRMs of the world. ये सारे के सारे systems जो हैं, at the end of the day, they are generating data. With wide variety, volume, velocity, and all these things, you have got enough data in the organization. So when we go back and we check with our customers, और ये global surveys हैं, Microsoft ने run किए हैं, MIT के कुछ surveys हैं, we are hearing a different feedback from the market. Because artificial intelligence को execute करने के लिए जिस form और format में data required है, वो तो है ही नहीं वहाँ पे. And these are all those challenges. Maybe it's around poor quality of data. It's about managing the legacy data. It's about data acquisition. It's about disparate and silo system. It's about spending significant time on data cleansing and all these things. These challenges are there. It's a reality. But data state के around जो challenges हैं, when you double click on those challenges, you would find कि उनमें से 90% plus challenges जो हैं, they revolve around culture, people and process. And a very small percentage is there which revolves around technology. So इसका मतलब है जो हम बात पहले से करते आ रहे हैं कि artificial intelligence, data and AI, it's not a technology, it's not a tool, it's not a software. It's a cultural change which organizations have to embrace. You talk about this digital feedback loop. अगर आपने Microsoft की presentations attend की होंगी तो ये बार आपको एक digital feedback loop नज़र आ रहा होगा. Because what we are trying at Microsoft is कि जी ठीक है, there has to be focus on two areas. One is the modernization of applications, और जिस पे आप सबने बात की अभी. You have spoken about the futuristic applications, right? Microsoft Business Applications, Power Platform, and all of this. These are the futuristic applications. They are cloud native applications. They are data driven applications. बिल्कुल इन चीज़ों पे बात हो रही है. Application modernization के ऊपर every enterprise, every organization is working today. But then there has to be an effort which needs to happen on the modernization of your data state as well. Because gone are the days कि जी आपके पास एक database होगा या एक basic सा data warehouse लगा हुआ होगा and you think you can unlock the entire potential of AI on top of that. Gone are the days. And this is where organizations get stuck. तो आपको ये दो spectrum के ends हैं जिसको you have to make them meet. And when you make them meet, so let's not come across only as a cost center. कि ठीक है जी IT ने एक बड़ा ज़बरदस्त टूल बनाया है जो कुछ insights देता है. The question business is asking, I lead a sales team. Microsoft के जो top customers हैं, I would not name them. I'm managing a lot of customers since past many years. And customers में technology का जो discussion है, that is a secondary discussion. The primary discussion is, how would you help us make more money? How would you help us save money? या आप हमारा risk का, compliance का, security का posture किस तरह से enhance करेंगे? आप हमारी brand value को किस तरह से increase करेंगे, enhance करेंगे? Brand की perception किस तरह से बेहतर होगी? ये discussions हैं in the boardrooms, in the CXO community. These are the discussions which happen. अब वो Salesforce कर दे या Dynamics 365 CRM कर दे या Oracle का solution कर दे, that is secondary.
प्राइमरी डिस्कशन इस कि जो बिजनेस के गोल्स हैं आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी को किस तरह मैप करेंगे. एंड वी सी 4 एरियाज वेरी वेरी स्ट्रांगली जहाँ पे हम इसकी पोजिशनिंग करना चाहते हैं. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है एक टेक्नोलॉजी को एक्वायर करती है, सो हाउ कैन दैट टेक्नोलॉजी एम्पावर इट्स एम्प्लॉयज़. अगर मेरे एम्प्लॉयज़ हैं और आपने एक पॉइंट ऑफ सेल्स ला के लगाया है और वो इनसाइट्स देता है, तो एक बंदा अगर 10 मिनट में काम करता था अगर वो 5 मिनट में काम करता है, तो इसका मतलब है आपने लोगों को एम्पावर किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. इसी तरह से कस्टमर एंगेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. इसका पूरा मॉड्यूल अवेलेबल है. आई वुड नॉट गो, आई अंडरस्टैंड यू ऑल नो दैट. पर कस्टमर का जो पल्स है, उसका जो सेंटिमेंट है, उसकी जो एंगेजमेंट है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, वो किस तरह से आपका सोल्यूशन मैप करता है. देन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो आपकी हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर यू आर, हाउ वुड इट हेल्प यू ट्रांसफॉर्म देम. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपके ऑपरेशंस हैं ऑप्टिमाइज किस तरह से होंगे. बिकॉज टुडे द डिस्कशन इज नॉट अबाउट कि जी टॉप लाइन का डिस्कशन नहीं है कि हम एक कंपनी हैं, हम $100 मिलियन करते हैं. बॉटम लाइन का डिस्कशन है कि अगर आप $100 मिलियन करते हैं आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है. तो एक कंपनी शायद जो $10 मिलियन का रेवेन्यू करती हो वो $100 मिलियन की कंपनी से बेहतर हो सकती है, बिकॉज उसकी जो बॉटम लाइन है वो ज़्यादा रिच है एज कम्पेयर टू दैट कंपनी. सो कंपनीज आर ट्राइंग टू बिकम मोर लीन एंड दिस इज वेयर दे वांट डिजिटल टूल्स टू. फॉर एग्जाम्पल, एक ज़माने में बैंक्स वर ओपनिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, and today I don't see banks are opening new branches left, right and center. But the discussion is कि जी downsize करो, branches को merge करो, because people have already moved towards digital banking applications and they're becoming more lean and lean. आप कोई credit card नया आता है बनवाते हैं, आप उसके discounts देखें, check करें, because you are encouraged to go for these electronic payments and all these things. So 4 key elements, and I'm also cognizant of time. 4 key elements जिस तरह से मैं इस पूरी life cycle को देखता हूँ या माइक्रोसॉफ्ट देखता है. इंटीग्रेशन का लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है. एनालिटिक्स का जो प्लेटफॉर्म है दैट्स वेरी क्रिटिकल. और जो सुपर क्रिटिकल है जिसकी बात भी की थी पैनलिस्ट ने, डाटा साइंस जो है, डाटा साइंस है, एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है. अब एक उस पर हम जा सकते हैं कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एंड एआई एंड डाटा साइंस. वो एकेडमिक डिस्कशन है, बट ऑल दीज थिंग्स गो इन पैरेलल विद ईच अदर. So we call it data science because it has to do with data plus AI both at the end of the day. And then visualization is also a very important part at the end of the day. ये पूरा life cycle है. अगर इसका कोई भी building block missing होगा, so people would not see the value. और जो आप ERPs और CRMs और power platform की applications लगा रहे हैं, अगर वो insights नहीं देंगे customers को, तो probably उनको शायद समझ में नहीं आएगा कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा है. 3 things where we see the application of AI in the industry very relevant. Digital agents, and I think everybody can relate to it. Because मैंने कभी भी किसी से पूछा कि AI का जो है आपको use case बताएं, तो उसने कहा जी chatbot. And that is probably the first workload every organization embraces, क्योंकि chatbot बनाना बहुत आसान है. और जब मैंने कभी दूसरा किसी से पूछा कि दूसरा workload बताएं, तो उन्होंने कहा जी self driving car. तो ये दोनों बिल्कुल स्पेक्ट्रम के अलग अलग एंड्स हैं. चैटबॉट और वो ऑटोनमस कार के बीच में एक दुनिया है, आई थिंक जिसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है. इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस, वट एवर वी आर डूइंग, अगर आप देख रहे हैं पावर प्लेटफॉर्म पे, D365 पे, इवन माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी टूल्स पे, प्रोडक्टिविटी टूल्स पे, यू वुड सी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कोई अलग से हमारी प्रोडक्ट नहीं है, अलग से हमारा सोल्यूशन नहीं है, पर इन प्रोडक्ट्स के बीच में इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी का नाम है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कोविड स्टार्टेड, टीम्स के ऊपर सारी कॉल्स हो रही थी एंड देयर वाज अ बिगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑन टीम्स. बहुत सारे इश्यूज थे विच प्रॉब्ली एआई रिजॉल्व्ड इट. आप अगर आज टीम्स में म्यूट पे हैं और आप बात कर रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि भाई आप म्यूट पर हैं और आप बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा. और इफ़ यू हैव गॉट अ बैकग्राउंड नॉइस, कोई बच्चा पीछे रो रहा है या देयर इज अ बार्किंग डॉग और एनीथिंग, तो वो सप्रेस हो जाएगी. एंड देयर कुड बी मल्टीपल यूज केसेस अराउंड इट. छोटी छोटी चीज़ें हैं. इसी तरह सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने सेंटिनल डिप्लॉय किया हुआ है, सिक्योरिटी सेंटर डिप्लॉय किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका IT एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और हर चीज़ को देखेगा. इंटेलिजेंट नोटिफिकेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स दे कम डायरेक्टली टू यू. So we see it as a built-in component, not a bolt-on component. AI जो है, it's sort of a very
closely knitted part of the entire life cycle. Business processes में you guys are champions, so I would skip that particular part. You understand कि जी business processes को जो है किस तरह से AI जो है affect कर सकती है. AI is all about giving human capabilities to computers, right? They can sense, they can comprehend, they can act. You talk about all these things, आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं शायद आपने इनको चलाया भी हो, देखा भी हो, because they are there for years and years now. Microsoft के Azure के ऊपर जो है AI की जो services हैं, they are available, and we will come to that. But the very important point which I wanted to make, और मेरी I think slide इसके ऊपर pivot कर रही है. At the end of a day, हमें ये देखना है कि उस AI की implementation का beneficiary कौन है. Let's not go wrong over here. And this is where technology fails. So let's think of an example, right? मेरा बैंक एक customer है, financial industry, FSI is my customer, पाकिस्तान की एक बड़ी financial industry exist करती है. If I take cases around, use cases around fraud detection, risk management, robotic advisors, virtual agents, RPAs and all these things, a bank would listen to me, a bank would understand me, and if they acquire those use cases, it would help them. पर अगर मैं बैंक में जाकर supply chain optimization या shopper behavior या for example मैं inventory management and all these things, if I try to prioritize with those use cases, probably they are not in preference over there. So Microsoft का जो एक बहुत ज़्यादा focus है वो industry purity के around है. जो employees Microsoft में काम करते हैं उनकी tech intensity और technology trainings और वो सारी तो mandatory हैं, पर साथ साथ वो जिस इंडस्ट्री वर्टिकल को फेस करते हैं उसकी डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ अ मैसेज आई ऑल्सो वांट टू शेयर विद पार्टनर्स एज वेल कि जो डोमेन एक्सपर्टीज़ हैं उसका होना और राइट यूज़ केस को पिक करना और लेके जाना. सो इमेजिन यू आर डिप्लॉइंग ERPs एंड अदर एप्लीकेशंस एंड देन यू आर इनेबलिंग दीज काइंड ऑफ यूज़ केसेस एंड देयर यू आर स्टेपिंग इन, यू आर अनलॉकिंग अ न्यू डोमेन, you are generating more revenue for your company, you are acquiring more skills as an individual, and it's a green field. Things, artificial intelligence, cybersecurity, there is an acute shortage, not even in Pakistan, but even in the markets like US. So I think it's our opportunity, it's our time. किसी ने Azure की बात की थी कि जी Azure के ऊपर AI का Microsoft ने investments किए हैं, जी बिल्कुल किए हैं. स्पेशलाइज हार्डवेयर भी अवेलेबल है. अगर आप सर्विसेज की बात करें तो मैनेज सर्विसेज अवेलेबल हैं लाइक मशीन लर्निंग स्टूडियोज़. अगर आप पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की बात करें डाटा साइंस के अराउंड या मशीन लर्निंग के अराउंड, तो आप देखें जो इंडस्ट्री के लीडिंग टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च के दो मैंने खुद पर्सनली यूज़ किए हैं, फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल. आप अगर फ्रंट एंड टूल्स की, डेवलपमेंट टूल्स की बात करें, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी टूल्स आर अवेलेबल. सो एन एंटायर स्टैक इज़ अवेलेबल ऑन Azure. And you don't have to leave the environment, and then you can just go and you can switch on that stack. The good thing is कि जी जो आपका नीचे services चल रही हैं, you really know these services, and the little I understand, they reside on a common data model, and you can leverage that common data model to turn on all these things which are mentioned on this particular layer. You can do modernization of your data, you can spin off cloud native applications, analytics insights, data science, and data governance, and all these kind of things. And there are many tools which have been acquired around data governance. Purview को देख लें आप, Synapse को देख लें आप Priva को देख लें. ये बहुत सारे जो नए recent acquisitions हुए हैं, they revolve around data security, data privacy, data compliance, which is also an important topic. And then this is how a bigger picture would look like, and this is how you would go to more rooms of your in a particular customer. अभी आप एक customer के एक organization में particular एक department से बात कर रहे हैं, and then you will start talking to 5 more departments if you will have an approach कि जहाँ पे you can have a full stack conversation out there. I have got probably 2 more slides left, and this is where I want to really emphasize a lot. Responsible AI is a big topic. Our president, Brad Smith, has published papers a few years ago as well, and it revolves around these 6 principles of the responsible use of AI technology. Because when we are automating and we are giving these capabilities in the hand of a code or a machine, तो आपको ये देखना है कि fairness remains there.
you have to see the factor of reliability and safety, and you could relate to it. आप सब IT professionals हैं. Privacy and security remains a bigger concern. You talk about inclusiveness, that remains a question mark. You talk about transparency, कि पूरी जो है आपको एक उस पे transparently आपको नजर आए पूरा process. You talk about accountability. So any system which is designed on top of artificial intelligence has to bear these sort of principles at the back end, and that is the only way that system can be sort of scaled or accepted or can go in production. Last part, we really believe as a company in tech intensity, and this is the message that whatever stack you work on, whatever your domain expertise are, technology is changing very rapidly, new and new platforms and components are coming up, and this is where every company is a digital company, and they need to have a very technology intense workforce. And I think it is also for the betterment of individuals, for the company, and for the end customers as well. With that, thank you once again, Faisal, Atif, and everyone, and for inviting me around. Thank you so much.